I was 18, he was 19, going to the customers and talking to them, and they are saying कि तुम कर पाओगे. Initially, we have delivered orders on our own cars also. Now they run a logistic company known as Riding Rangers. Why Riding Rangers? Because COVID time में our delivery executives were working as rangers for COVID patients and everywhere. One fine day when my parents were sitting next to my room, I just went and said कि मैंने शुरू कर दिया है. I am doing it now. They were like कि कॉलेज पढ़ाई क्या करोगे? मैंने कहा सब ऑनलाइन है, हो जाएगा, छोड़ो. So I got a random call and मैंने उठाया and she said I'm Menika Gandhi and you wrote an email to me. So at that time like हमारे राइडर्स ना वीडियो बना के भेजते थे कि देखो ये सब यहाँ पे and हम पास कर पा रहे हैं. So that was a big achievement for us. We have more than 300 plus riders. Who are on your payroll. Yes. Apparel industry में are these big brands or the local boutiques Yeah, and we all? are doing with Puma. In last 1 year, I don't know any client who has left. I never used to sit in my class. Like all the teachers had a problem with that. I didn't know what GST is, what is accounts. And how does your friends feel about it? How they brag about you guys कि अच्छा यार मैं ऐसे दो दोस्तों को जानता हूँ जो अपना कुछ कर रहे हैं. Hi guys, welcome to the next episode. Every time whenever I come to this room, I always get excited because I meet young guys, I meet young entrepreneurs, I meet the dreamers who actually want to make the change, who question the status quo. Today I have two such young people. I would not call them students because they are entrepreneurs, they are grown-up entrepreneurs. They might look young, they are just 23, 24-year-old young entrepreneurs, but they have been doing their business for last 5 years. And उस कैटेगरी में काम कर रहे हैं जो कैटेगरी easy नहीं है. It's category which is bound to be disrupted, not nationally but globally also, and that category is logistics. And that too when the business models are moving to hyper local, when the business models are moving to local, when the customers are becoming more demanding. अब वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन की डिलीवरी की बात नहीं रही है. वो 10 मिनट की डिलीवरी, 15 मिनट की डिलीवरी, आधे घंटे की डिलीवरी है. वो डिलीवरी पैकेजिंग की नहीं है, वो डिलीवरी अब सर्विस की भी है कि मेरा खाना कैसा आ रहा है, मेरे कपड़े कैसे आ रहे हैं. सो वी हैव रिया एंड अंचित, 2 young graduates who completed their graduation from Delhi University in last couple of years. Now they run a logistic company known as Riding Rangers. Cool नाम है. And let's get into the details. Why do they do what they do? Welcome guys. Thank you so much. So let's start from you, Ria. Let's talk about के क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आए हो और ये कीड़ा कहाँ से आया कि कुछ करना है. So I did my schooling from APJ, and from the very beginning I was a very motivated student. Like I always wanted to do something of my own. I was very good in studies, like always in top 5 of my batch, but I never used to sit in my class. Like all the teachers had a problem with that because I was into dancing, I was into art, music, sports and everything because I always wanted to stand out of the crowd. So just after completing my boards, it was announced that there is a nationwide lockdown. Yeah. And the first thing that I got really pissed out of was that मेरे को मैथ्स का पेपर क्यों देना पड़ गया. इससे पहले हो जाता तो that would have been a luck for me. But obviously then sitting idle was not my thing. So we were discussing that there are actually a lot of problems people are facing. Okay. तो स्टार्टिंग में ये भी नहीं सोचा था कि बिजनेस की तरह करना है. इट वाज कि पेट्स को प्रॉब्लम हो रही है. दैट वाज हाउ इट स्टार्टेड. माय पेट वाज अनवेल एंड वी थॉट कि मेडिसिन लाने के लिए भी गार्ड को बताना पड़ा कि डॉग को साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल तक जाना है, नॉट अलाउड फॉर्डर. एंड आपको इतना तो पता भी नहीं होगा दैट वी हैव इवन ट्रांसपोर्टेड पिजन्स टू द हॉस्पिटल्स. क्या बात कर रहे हो? Yes, so that is like we had a small cage वाला bag also. एक किटन को वी ट्रांसपोर्टेड टू मेरठ ऑल्सो कि राइडर रास्ते में उसको दूध पिला रहा था अपने हाथ से. तो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड एज अ सोशल सर्विस. बट
within time we understood that actually market में gap है, businesses चाह रहे हैं हमारे साथ काम करना. Okay. So our numbers were flooded in WhatsApp groups, Facebook groups. We were getting so many calls from a lot of people कि इस time पे when even Zomato and Swiggy are also facing a problem to deliver products. So if there is a company who can even help us or something like that. So that is how we started. वाओ. सो जब ये कंपनी स्टार्ट की थी अंशित, तो उसी टाइम पे नाम रख लिया था या कैसे था? हाउ डिड? Earlier, it started by the name of Fast Forward Logistics. बाप रे. Then when we were about to register it, then we got to know कि इस नेम से तो ऑलरेडी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी या कोरियर कंपनी रजिस्टर्ड है. Then वो हमें in between the phase, then we switched it to Riding Rangers. And why Riding Rangers? Because COVID time में our delivery executives were working as rangers for COVID patients and everyone. So this is the way how it started. And how do you both know each other? And what do you manage and what do you manage? So we know each other from childhood. Our parents were friends at that time. So when we had, let's say, summer vacations, so अगर जा रहे हैं, so during the school time or something, we used to meet. So from there, this journey has started. बट तुम दोनों में ग्रेजुएशन का एक साल का गैप है, तो किसका आइडिया था और किसने जाके किससे बात की और कन्विंस किया? ये लाइक नॉर्मली हम ये एंटरप्रेन्योरल स्टोरीज जो देखते हैं, या तो ये सेम बैच में देखते हैं या सेम हाउस होल्ड में देखते हैं, नेबरहुड में बहुत कम होती है. So as I told you, एक बैच का डिफरेंस था, बट जब मैं 11th में थी और जब अंशु 12th में था, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स था ना, वो स्विच हो गया था. लाइक द सेम सब्जेक्ट वाज बीइंग स्टडीड 11th में माइक्रो एंड 12th में ऑल्सो माइक्रो. अच्छा. So that was the first time that we had a bet कि कौन ज्यादा नंबर स्कोर कर सकता है, because we were in the same. आई एम श्योर यू वुड हैव वन. Yeah, till that time I didn't know, right? But yeah, I studied art because of that. So that was the thing. अच्छा. And it was why I said that we didn't think of starting it as a business only. Fair. So we were on a call, we had like immense love for pets, both of us. Yeah. So that's how we started. Like our first client was a hospital. So And we can't say that कि हमने ये किसने initiative लिया. It was a mutual thing कि हम and we had discuss कर zero रहे हैं. knowledge about business. Yeah, Like I yeah. say that I come from a business background. I know like what hard work is. I know the value of money, but I never knew how to make an invoice. I was from an arts background. I didn't know what GST is, what is accounts. But it was within the due course of time that I understood. Like in the beginning, we didn't register the company. Obviously. And we didn't We know used how to- to make an invoice. What was tedious, like some company just paid us some amount less, and we were like, why did you pay us less? So we understood that there is something called tedious. So what is that? Why you didn't? उन्होंने 10% TDS काट के दिया, तुम अपने पैसे ढूंढ रहे थे. We didn't tell our parents also in the beginning. Achha. It was one fine day when my parents were sitting next to my room. I just went and said कि मैंने शुरू कर दिया है. I am doing it now. They were like कि कॉलेज पढ़ाई क्या करोगे? मैंने कहा सब ऑनलाइन है, हो जाएगा, छोड़ो. Leave it on me. And what about your parents? How did they They react? were okay with it. मतलब उनका ये था कि जो भी कर रहे हो, it should be like a fair means of business. कुछ भी गलत काम मत करना, and we know that you guys are hardworking. कुछ अच्छा कर लोगे. So they were positive since day one. And how does your friends feel about it? How they brag about you guys कि अच्छा यार, मैं ऐसे दो दोस्तों को जानता हूँ जो अपना कुछ कर रहे हैं. Initially क्या होता था स्टार्टिंग में, वो लोग जब कोविड ओवर हुआ, पार्टीज कर रहे होते थे, Yeah. हम काम कर रहे होते थे. बिकॉज पैरेलली सेम टाइम था इसका कॉलेज का लास्ट ईयर, एंड आई जस्ट एंडेड अप माई कॉलेज 2 months बैक. सो उस ड्यूरेशन में एवरीवन, माई फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स, दे वर पार्टिंग Obviously. एंड वी वर वर्किंग. सो कभी कभी फील होता था कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग अपनी लाइफ कैसे स्पेंड कर रहे हैं. बट आज अगर हम देखते हैं तो अब वो लोग एक कहीं ना कहीं जॉब्स या मार्केट में फिगर आउट कर रहे हैं दैट व्हाट दे हैव टू डू. In their life. We are on track. We know that what we have to do. We have a specific goal. We have to achieve it, and now we are just thinking about the scale. We're not thinking about a kickstart. Yeah. Like वो real FOMO feel हुआ था पूरी college life, because like I was into my dance society. I was the vice president there. I left up the job, like the post of president there in my final year. वहाँ पे भी मैंने पढ़ाई नहीं की. मतलब एंड में मुझे पता है मैं 2 महीने में भी टॉप कर सकती हूँ, बट हर क्लास ख़त्म होते ही सीधा ऑफिस जाना, एंड ऑफिस के बाद सीधा घर सोना, सुबह उठते ही कॉलेज, एंड कॉलेज में भी पूरे टाइम लाइक माई व्हाट्सएप यूज टू कीप फ्लडिंग विद मैसेजेस, अ लॉट ऑफ मैसेजेस. तो वो था, बट करा बिकॉज वो जील था कि कुछ करना. Very good. So let's move forward from a journey जहाँ से
अब तुम्हें लगा कि यार ये ना अब ये इंसिडेंटल या ये सोशल सर्विस नहीं है, इट कैन नाउ बिकम अ फुल टाइम कंपनी वेयर वी कैन, तो वो स्टेज कब था, वो साल कब था? बिकॉज उस टाइम पे तुम दोनों पढ़ ही रहे होगे, तो व्हेन डिड यू डिसाइड कि नहीं यार यह बिजनेस मॉडल बन सकता है? विद इन अ स्पैन ऑफ आई थिंक 3 months. Yeah. अच्छा, Yeah. जब हमने करा स्टार्टिंग में 3 महीने के अंदर अंदर ही हमें दिख गया कि ये हर किसी की रिक्वायरमेंट है. इट्स नॉट ओनली अबाउट कोविड पेशेंट्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट द सोशल सर्विस, द ब्रांड्स और द स्मॉल रिटेल स्टोर्स हु आर सफरिंग, कि जो घर तक राशन नहीं पहुंचा पा रहे, उनको भी बिजनेस की नीड. Like even a lot of home bakers also we Yes. tied up with them who were making food. so okay, now if you talk about today, so if you have to tell someone what does Riding Rangers do, Right. what will be your pitch? So Riding Rangers is a customized same-day delivery solution dedicated for businesses. We have a very vast technology which will actually ease out all your delivery operations. So what you want to do is focus on your product and all the logistics is on. And how is that different from, let's say, other delivery logistics solutions available in the So market? let's take an example of Porter or Borzo. They are C2C oriented companies. Fair. They're not B2B2C companies. They are not giving a customized delivery solution. They have a specific funnel, let's say. आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, रूटिंग आपको मैनुअली करनी है, उनकी एप्लीकेशन पे जाके आपका ऑर्डर एलोकेशन एक गिग राइडर को है, जिसके लिए यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड चेकअप और समथिंग. बट इन आर केस आप एक कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हो, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट अ राइडर, यू जस्ट हैव टू सेंड दोज ऑर्डर्स, company is going to make those routes, our technology is going to do that for you. So everything is, let's say, spoon feed it to the customer. And with this, obviously, you will partner with such brands or the companies जिनके पास एक predictability of orders होगी. तभी वो, so how do you choose who is your client or who's your sector? वहाँ पे कैसे आप figure out करते So हो? basically we have clients जिनके एक दिन में 2-3 ऑर्डर्स भी आते हैं एंड Okay. ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनके 200-300 ऑर्डर्स भी आते हैं एक दिन में. Okay. So you know just the pricing model is a little different for both of them. एंड जिसका एक या दो ऑर्डर आते हैं, वाई वी आर बेनिफिशियल फॉर देम, बिकॉज उनको फिक्स्ड कॉस्ट में इतना पुट ऑन नहीं करना. Yeah. कि अगर वो डेडिकेटेड राइडर रख लेंगे तो एक महीने का 25,000 30,000 कहीं पे भी नहीं गया, लग जाता है राइडर को. बट दे नो दैट जब भी ऑर्डर आएगा दे विल हैव अ डिलीवरी बॉय टू डिलीवर. एंड इफ आई टॉक अबाउट बिग कंपनीज, तो दे वांट अ डैशबोर्ड कि जहाँ वेयर हाउस के पास भी वही डैशबोर्ड हो, स्टोर्स के पास उसमें कोई पर्टिकुलर सर्विसेज हो जो अवेलेबल हो, ताकि एवरीथिंग इज कमिंग अंडर वन फनल. वरना कभी कभार स्टोर्स ने अपने आप से कोई डिलीवरी करवा दी, खुद के पास पैसे रख दिए, देयर इज नो चार्ज, नो There are डॉक्यूमेंटेशन. 2 to 3 kinds of clients. One is, जैसे रिया ने बोला, जिनके 2 ऑर्डर्स हैं, उनको हाइपर लोकल प्लेयर चाहिए जो Okay. डेडिकेटेड एक वो फिक्स्ड कॉस्ट अपने साथ नहीं कर सकते. Fair. दे हैव अ वेरिएबल कॉस्ट. Fair. सेकंड इज जिनके पास, आपने बोला, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर्स. जिनका प्रिडिक्टेबल है, दे हैव लेट्स से वन सेट ऑफ वेयर हाउस जहाँ से सारा डिस्पैच होना है, और वो पर पैकेट ऑर्डर्स पे काम करते हैं. दैट गिव मी अ सर्टेन कोड एंड वी विल गिव यू दीज मेनी mg ऑफ ऑर्डर्स, और ये आपको करना है. थर्ड इज जिनका एक रनिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, हु नोज कि मेरा रिटेल स्टोर्स भी है, मेरा वेयर हाउस भी है, मेरा ऑनलाइन भी है, आई हैव ऑल द वर्टिकल्स. मुझे शायद ऑनलाइन, रिटेल या किसी कस्टमर का कॉल पे या कस्टमर वॉक इन करेगा, मुझे ऑर्डर दे जाएगा, नाउ आई हैव टू केटर दैट ऑर्डर. सो दो सर्टेन क्लाइंट्स रिक्वायर अ फिक्स डेडिकेटेड राइडर हु इज वर्किंग ऑन देयर बिहाफ, बट दे आर ऑन आवर पेरोल. And managed completely by us. Managed completely. So it's if I say it's a full stack logistics solution. Yes, absolutely. For a business, right from technology to the manpower to, let's say, Managing all the Right. here and there operational hassle. operations, training, everything. Absolutely. And we are the only company, as you mentioned, कि हम different कैसे हैं, who take riders on their own payroll. We pay them salaries. The companies They are pay like gig them on workers. order basis, packet basis, distance based or something. Our riders on fixed payroll. So like if you have a bakery, we'll give you a proper insulated bag which will even have dry ice facilities. We'll have a IoT device which can actually check and track the temperature of your product. So we have tie-ups with meat companies also. If in gifting, I go to companies like F&P who are dealing into cakes which are frosted. So we are delivering those safely even to 90 kilometers. So as a bakery before, via Swiggy or Zomato, if you were able to cater to an audience which was located only under 7 kilometers, so now you can actually boost your sales because directly your audience
is in that 90-kilometer radius. Fair, You fair, can even fair. run ads, you know, the radius of the ads you can increase. So, if we have to talk about numbers, let's say last month, कितने orders deliver किए तुम्हारे platform के through? If we talk about numbers, there were somewhere around 6,000-7,000 orders. 6,000-7,000 last month. Yes. And let's assume, so roughly around 50,000 orders a year. And how has been this journey? Let's say, जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था तो पहले साल कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे, दूसरे साल क्या ऑर्डर्स थे? अगर हम पहले साल को लें, शायद हमने पर डे हम 15-20 orders. Yeah, 15-20 orders a day, and it was all on Google Sheets because at that time we didn't have the tech. So in the beginning we started with just using WhatsApp live location, WhatsApp groups with the riders, and Google Sheets. That is how we So did. 5,000-6,000 orders a year. Initially we were doing. Now we are doing 70,000-80,000 70,000 orders in a year. Wow, wow. And आप लोगों ने अपने रोल्स कैसे डिवाइड किए हुए हैं? तुम क्या देखती हो, तुम क्या देखते हो? So if I talk about my roles, I look after the BD and the operations part. Okay, and what about Yeah, you? so I look after the finance and the back end and the SOPs specifically, I'll say. तो ये कहीं तो पढ़ा नहीं था, नहीं पढ़ा था. तो ये सीखा कहाँ? Exactly, I'm not from finance. Yeah. मुझे पता भी नहीं था credit debit क्या होता है. हाँ. But obviously, you know, that interest, like, in fact, I was always away from maths in my 11th, 12th. But अब शायद डेस्टिनी में होगा कि numbers में ही है सब कुछ. Yeah, And she's actually very good with numbers. Yeah. If we talk about the finance is the backbone of the company. Yeah, yeah. That how much we do have to collect, how much we do have to pay, what's the profitability, what's the EBITDA, what's the final General economics NP and and- everything. So she's You guys are profitable? yes, we do are. Very good, yeah. Very And we are good. profitable since day one. या ये सीखना चाहिए बड़ी बड़ी कंपनियों को. Though the scale may be lesser, but the real joy is running a company profitably. That's And how to figure out scale. That's the most Right. important thing. You know, at 24 years or 25 years of age, if you are managing 60, 70, a lakh orders a year, that's not a small feat. And running it profitably is a great achievement. We even withdraw salaries also. Yeah, very good, very good. So even in the beginning, you know, just going as very young, I was 18, I was 18, he was 19, going to the customers and, you know, talking to them and they are saying कि तुम कर पाओगे. But you know, they had a zeal. Like कभी ऐसा feel नहीं हुआ कि वो सोच रहे बच्चे नहीं कर पाएंगे. They also had Very a good, zeal right. कि करना है कुछ. Because we actually realized that we are not convincing them, we are actually helping them with Solving our their service. problem. But we Yeah. will tell you something else also. Initially, we have delivered orders on our own cars also. I'm sure. Both of us went one day. उस दिन riders की shortage थी, बारिश हो रही थी, but हमारे orders accepted थे. We were just let's say 2 months old or 3 months old company. Yeah. So we thought कि अब ये तो customer feedback गलत जाएगा. We took one of our employees from the back end. कार में गए, कार की पूरे बूट भरा हुआ है, बैक सीट इज फिल्ड विद ऑर्डर्स एंड बोथ ऑफ अस आर गोइंग बाय व्हाइल वियरिंग अ कैप वी आर सेइंग सर योर ऑर्डर मैम योर ऑर्डर बिकॉज वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ फ्लीट वी डोंट हैव बैकअप राइडर्स नाउ वी हैव टू डू समथिंग ऑफ इट एंड वी कैन लूज ऑन रेवेन्यू वी कैन लूज आवर क्लाइंट So do you deliver orders now also? No, not now. नॉट नाउ अब जरूरत नहीं पड़ती. But it's a good way, you know. I think just to know about the know customer how market, yeah. what does your rider feel about it? How does customer behave? once in let's say once in a year we go but Yeah. we see at a client's place Yeah. that how our riders are picking up orders how they're managing but not at the customer's place now but at a client's place. How did you get your first large client? So that was after a lot of visits, I'll say. Like initially we used to cold email all the customers. Cold calling initially Cold not even calling cold and emails. emails also. Yeah. Both. I used to do both. तुम्हें ये भी नहीं पता था. No, in the beginning I only used to, Fair, you fair, know, call clients. I used to do the BD in the beginning. And work India पे register करते थे. I used to call those riders that यहाँ पे एक ऐसी XYZ कंपनी है हम आपको ये ज्वाइन करोगे ये सैलरी मिलेगी और उसको हम पूरा मॉडल समझाते थे फ्रॉम स्क्रैच. आज कितने राइडर्स हैं? आज अगर हम राइडर्स देखें थ्रू आउट द कंट्री वी हैव मोर देन 300 प्लस राइडर्स. Who are on your payroll? यस So that's a huge responsibility भाई. मतलब उन 300 लोगों को मंथ एंड में या उस पे आपको सैलरी देनी है. बिफोर 7th. Before 7, that's the process you have set up.
अब irrespective के मान लो तुम बॉम्बे में भी हो, you are present in how many cities? More than 5 cities. So you have 5 cities. अब वहाँ उसकी डिलीवरी हुई कि नहीं हुई, बिकॉज वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी है, वो क्लाइंट्स लाना, वो डिलीवरी लाना. That's a huge risk. Why would you do that? Like this business, how, explain me the benefits of having riders on your payroll versus the large companies who are working with gig workers. क्या pros and cons हैं? So there are many pros and cons. मैं आपको एक चीज बताता हूँ. In Delhi, we are working on a model जिसके अंदर order deliver हुआ नहीं हुआ, we have to think about it. Because यहाँ पे हम hike पर local कर रहे हैं. In other states, we are complete doing the dedicated rider model. ठीक है. So fixed clients, fixed stores, fixed number of hours, fixed number of pages. ठीक है. That is fixed. Secondly, how it like makes a difference. आपको अगर एक कोई बोलेगा, let's say in your own company, आप ना पोर्टर से ही ऑर्डर भेज दो. Let's say they are your official documents which are very urgent to you. Secondly, आपको ये बोलेगा कि ये नोन कंपनी है, राइडिंग रेंजेस का एक फिक्स डेडिकेटेड राइडर आएगा, वो आपसे डिसेंटली लेगा और आपके कस्टमर को जाके बोलेगा फ्रॉम दिस प्लेस आई ब्रॉट योर डॉक्यूमेंट्स, वेयर यू विल फील द सेफ्टी पार्ट. सेकेंडली, दैट गिग राइडर इज वर्किंग फॉर 3 to 4 कंपनीज. उसका जो डिलीवरी टाइम होगा वो ज्यादा होगा. वो एक ही टाइम पे पोर्टर का ऑर्डर भी एक्सेप्ट करेगा, वो एक ही टाइम पे बोर्सो भी एक्सेप्ट करेगा, वो एक ही टाइम पे अंकल डिलीवरी भी Like एक्सेप्ट they करेगा. merge orders. अच्छा. बट हमारा राइडर सिर्फ हमारी ऐप चला सकता है. अगर कोई और चला रहा है हमारी आईडी ब्लॉक हो जाएगी इंस्टेंटली. He can't take any other order. और So अब like जब the tracking is such that his entire route is being tracked. अगर वो थोड़ी देर 10 मिनट भी कहीं halt कर रहा है, so we'll get a pop-up Pop-up. message. This brings to my next question. I'm sure your drivers, your riders, many of them would feel कि यार कर लेता हूँ ना काम, मैम को कहाँ पता लगेगा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, ग्रेटर नोएडा में बैठा हूँ, बॉम्बे में बैठा हूँ. Right. तो हाउ डू यू, ऑब्वियसली पेनलाइज करना तो एक बात है, उसको आपने Right. ब्लॉक कर दिया, Right. लेकिन हाउ डू यू मोटिवेट देम, ट्रेन देम, वो कैसे करते हो? Firstly is that they don't get that much idle time, because as we know that these are our clients, so these are a minimum number of orders that we'll get. Some days there can happen that there is a little shortage of riders, but it's a very rare scenario where the riders are more and the orders are less. So Right. that is the benefit of why did we do B2B, because we know that there is a consistency of business that is going to happen. secondly, main part is when we hire our own riders, we have that cash on delivery facility available. Yeah. If you talk about gig workers, you have to send 20,000 rupees cash at someone else's place. Yeah. You don't have a background check of that rider. How will you send it? Yeah, But- that's a big advantage. With our company, we know our riders are police verified. We do get a verification done. We do get their background check done. We do have like where A they proper live, training which everything. happens. And training programs are there. At our office place, they have to come. They have to be recruited. They have to visit. Who and was your first hire, corporate first hire? And how big is your team now? We are around 25 people in the And backend. सबसे पहले हायर किसको किया था? अपने राइडर को बैकएंड में प्रमोट किया था. अरे वाह, वेरी गुड यार. So वो एक सबसे ट्रस्टवर्दी राइडर था. अच्छा. He was very quick enough and he has been there since, let's say, he did riding for a couple of months and then he was in a backend team. And managing operations? Yes, Yes. managing riders and operations. So in the beginning, we only used to do Obviously. handle the operations. नहीं, इसलिए बोला तुम दोनों के बाद तीसरा, तो उसको जब तुमने बोला कि यार अब तुम्हें मैं राइडर से करूंगा, उसकी क्या फीलिंग थी? He was very happy and he was like कर लूंगा. अब उनको नहीं पता, उनको सिर्फ सैलरी समझ आती है. Fair. मैं इनिशियल स्टेज अगर बोलूँ आज की डेट में व्हाट दे विल फील कि मैं तो बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में आया, आई हैव सीन दैट ग्रोथ, आई एम इन द बैक एंड, आई एम फीलिंग मच लाइक लेसर रिस्क एज कंपेयर टू ऑन रूट और समथिंग. Yeah. बट नाउ दे आर वेरी हैप्पी. Very good, yeah, very good. And what's these 25 employees, corporate employees you have, what's the average age? They're all young in their 20s, 30s. Who's the oldest? Or like, who's the oldest means, what does he do? फाइनेंस, Finance. Yeah. द बेसिक टैली एंट्रीज. जब उसको हायर किया तुमने तो उसने नहीं बोला कि यार तुम बच्चे, तुम मुझे क्या हायर कर रहे हो? No, that's not the case, you know. I am so much into finance that sometimes if he gives me any working which has a difference of even 2 rupees, I say that finance is finance. Like even a 0.5 rupee difference should not be there. So that's not the case. Everyone had trust on us. Wow. In fact, sometimes it's difficult, you know, because we are young and all our employees are generally elder than us. Yeah. So even if you have to command, but you have to, you know, maintain that respect also. Yeah, no, that's what I'm saying, because it becomes very difficult to manage that balance
कि भी आपको वो एज अ फाउंडर भी देखें, but many times you will also learn from them also because they have more experience. That's Absolutely. Yeah. But इनिशियली जब ज्वाइन कर रहे होते हैं, एक शायद किसी को तब डाउट आ सकता था, बट जब सैलरी एक सर्टेन डेट पे हमेशा उनके अकाउंट में हिट करती है, उनको वो हम एक प्रमोशन मिला टाइम टू टाइम, उनको वो ग्रोथ मिली, उनको वो एक स्टेबिलिटी मिली, उनकी गलतियों पे उनको माफ किया गया और ओवरकम करने का उनको चांस दिया गया कि आप प्लीज डोंट डू दीज मिस्टेक्स अगेन, देन देयर इज समथिंग कि उनको और ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है. एंड व्हेन योर एग्जिस्टिंग टीम इज देयर, दे आर द ओनली प्रमोटर्स टू द लाइक न्यू एम्प्लॉइज. बिकॉज ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री में ऐसा चीटिंग वाला स्टफ होता है काफ़ी. स्टार्टिंग में लाइक सम ऑफ द राइडर्स जस्ट पुल्ड इन एंड टुक अराउंड 4 to 5 lakhs of COD and just ran away. Nowhere was like, it was nowhere that someone could help us or something. Great. Let's talk about now because this, let's say, the full stack delivery logistics solutions is a requirement of all the industries, of all the sectors. Which are the top 3-4 of your sectors जो आपको 80% of the revenue contribute करते हैं? Pet industry, apparel industry, food and beverage industry, and I would Gifting say industry as well. gifting industry as well. Great. And mostly that bakery sector, you can say. Fine. And apparel, apparel industry में are these big brands or the local boutiques Like and all? we are doing with Puma. अच्छा. So what they do is that one is that their distributor channel. So all the stuff that they want to deliver from their warehouse to all the retail outlets. अच्छा. So that we do. Apart from that, for example, if you go to a store in Kamlanagar, let's say, and the customer liked one particular shoe, But it's available in Connaught Place. available in Connaught Place, right? So we directly deliver from Connaught Place to them. his Because customer's in our place. dashboard, they can see that which inventory is available where. They can just click and directly it's And Also, now- you have integrated the inventory also. inventory also. Yes. Like if Why would you do that? because for these types of models which are omni-channel and they want to actually increase the sales just by seeing that which product is available where. Wow. So what I understand now that initially you talked about fixed rider model, then you obviously have the let's say the number of area पे आपने किया हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी आपके 2-3 और cuts हैं. So doing too many things. How did you reach? How did you reach out here? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि पहले महीने में ही सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया. How did you figure it out कि मुझे Over the time, like this thing gradually happened. हमने सिर्फ स्टार्टिंग में एक ही मॉडल था which was hyper local on demand orders. ऑन डिमांड के बाद हमें धीरे धीरे रियलाइज हुआ, कस्टमर्स एक कंपनी ने मांगा कि मुझे अपना एक राइडर 10 घंटे के लिए परमानेंट दे दो. हमने दिया. देन वी सॉ कि ये तो और कंपनीज को चाहिए, हमने वो मॉडल शुरू कर दिया. देन वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड FTL ऑल्सो, दैट इज अ फुली ट्रकलोड एंड PTL पार्टली ट्रकलोड. सो इन FTL वी रियलाइज्ड कि कंपनीज को एक दिल्ली से मुंबई सामान भेजना है, बट ये सामान तो 6 टन है, हम मना करेंगे, वी विल लूज ऑन सेल्स एंड बिजनेस, सो व्हाई नॉट टू like explore this thing. Then we explored and then we thought कि this is a very easy thing, we can so do now this. we are coming into products also कि ऐसा product कि वो अगर ड्राइवर के सामने रखा हुआ है तो that camera will automatically sense that that's the same driver driving. He has to blow into one pipe first, so there will be alcohol testing which is done, and once it's approved then only he can drive the vehicle. Right. And then we have a lock. Like once you put it, it will only open at a geofence location of let's say just 100 meters of the drop location. Other than that, it cannot open. But are these the requirements? See, because any new product enhancement you will do, it comes with its cost. Right. Someone has to pay for it. Right. So are these the requirements which your many clients are saying and they are ready to pay for you Yes. also? Yes. Yes, we will tell you a reason why. Yeah. You are sending certain, let's say you have a business of apparels. ठीक है जी. A truck worth rupees 6 crores is going from Mumbai to Delhi. ठीक है. आपने वो बेसिक पेपर की हमारी अभी तो सील लगती है, येलो कलर की, इफ यू हैव सीन, क्या सिक्योरिटी है कि वो रास्ते में बंदे ने चेंज नहीं करी. सील कैन बी डुप्लीकेटेड बट अ लॉक कैन बी डुप्लीकेटेड. सो एक सील कॉस्ट करती है आपको 500 रुपीज ओवर दैट ट्रक, एक लॉक कॉस्ट करेगा शायद 10,000 रुपीज, बट दैट 10,000 रुपीज कॉस्ट इज अ वन टाइम कॉस्ट. आपको वो जो रेकरिंग फैसिलिटी मिल रही है दैट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग. नाउ दैट 10,000 रुपी लॉक विल हेल्प यू विद 100 ऑफ योर ट्रक्स. सो cost is almost same.
but facility, trust over that product, and safety norms gets better. And So, sorry, coming back here also, so I think riders, training of the riders, and then this services, product, solutions. Do you guys, गाड़ी किसकी होती है? Gadi is of the truck owner. Truck owner. Yeah, we don't own those vehicles. so we and are an asset light model. एंड देन व्हेन यू बिकॉज अब जैसे मान लो यहाँ पे आपको इंसुलेटेड बैग लगाने हैं या जो हमने बात की लॉक्स की, सो देन यू व्हेन यू हायर दीज व्हीकल्स देन यू गो एंड देन यू इंस्टॉल, लेट्स से यू गिव द राइडर दिस बैग, या ये बैग कैरी करना है या ये बैग्स तो जब राइडर ज्वाइन करता है उसी दिन में उसकी किट का पार्ट है. आपने ज्वाइन किया, बैग इज योर्स नाउ. दैट्स इट. दिस इज द बेसिक पॉलिसी दैट वी फॉलो. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट मिस्टेक जो आज तुम्हें लगता है कि यार अगर ये नहीं करते ना तो आज हमारी कंपनी का स्केल अलग होता, या कुछ और, नॉट मिस्टेक बट some decision which you may not even have taken? I'll not say about scale, but in the initial being, if you would have a little more knowledge about legalities in a startup, I think that would have ripped us Helped a lot us. of benefit. Okay, let me ask this question again. अगर तुम्हें अगले साल 10 लाख ऑर्डर करने हैं, क्या करना पड़ेगा? Actually, इसी सेम मॉडल पे पॉसिबल है वो 10 लाख ऑर्डर, बट देर इज़ ऑलवेज कन्फ्यूजन इन आवर माइंड कि क्या फंडिंग लेके एकदम से बूम अप करे या बूटस्ट्रैप रह के खुद से करे, बिकॉज ऐसा नहीं है. 10 लाख ऑर्डर्स इज स्टिल ईजी, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड इन द मार्केट, एंड डिस्पाइट लाइक सबको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उसके बाद भी, बट कंपटीशन है तब भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है बिजनेसेस के लिए. लाइक on a metric, 60% of the businesses fail to find a reliable delivery partner. So that is one thing. So today, how many clients you work with? Like, what's the number? More than 100 clients we are working. And these are your recurring clients. These are recurring clients. And what is the any reason? Let's say some of your important or big or large client left you, and what was the reason? Initially, we were not tech based. Okay. We were running it manually via WhatsApp or Google Sheets, as she mentioned. So वो एक reason है starting में clients गए, but in last 1 year, I don't know any client who has left us. And we have even regained them Yeah, back. regained those clients. Because they were really happy with the services. So we have to just keep buckling up with the, with the changes. Initially, which we are were also required. rigid with certain things that we are not going to enter into dedicated rider. हम आपको फिक्स्ड राइडर नहीं देंगे, हम सिर्फ हाइपर लोकल करेंगे, हम सिर्फ ऑन डिमांड करेंगे, हम सिर्फ किलोमीटर रेट पे चार्ज करेंगे, हम तो पर पैकेट भी नहीं करेंगे. हमें धीरे धीरे वो समझ आया कि जिनके वेबसाइट पे 100 ऑर्डर्स हैं उनको पर पैकेट भी चाहिए, उनके लिए किलोमीटर फीजिबल नहीं है. फिर जिसके फिक्स स्टोर्स है उसको डेडिकेटेड राइडर भी चाहिए. देन हमने तभी ये 2-3 अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करी. एंड दिस FTL एंड PTL में वी आर वर्किंग एज एग्रीगेटर्स. ये हमारा फुल टाइम बिजनेस नहीं है. Fair. Our main hardcore full time business is a two-wheeler business. Fair. That is via delivery executives. And let's say you guys said that you are in 5 cities. Right. ठीक है, दिल्ली NCR अपने आप में इतना बड़ा है. It's बिल्कुल. not. It's a big country. Right. In itself. Why did you choose to expand to other cities? So what happened was हमारा एक क्लाइंट XYZ क्लाइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता था. उनके स्टोर्स पैन इंडिया में और स्टेटीज में भी है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी. उनको सर्विसेज इतनी अच्छी लगी, वही हमें अपने साथ लेके गए. So that But was वहाँ जाके हायर करना, राइडर्स को हायर करना. We hired HR companies there. HR companies were recruited that we will pay you a percentage of this particular executive, hire on these terms, these are our terms, and मुझे इस पे राइडर चाहिए. Because in this industry, it's not necessary that you need to have an office in all the states. Yes. ऑपरेशन मैनेजर्स के साथ ही काम कर लिया. Yeah, exactly. So we did from here only. ग्रेट. चलो, तो अभी बात करते हैं, हाउ डू यू कीप अप विद, लेट्स से, बिकॉज सी यू गाइज डिड नॉट कम विद एनी एक्सपीरियंस. Right. आप लोगों को अपनी पर्सनल एक अपॉर्चुनिटी मिली, उस अपॉर्चुनिटी को आपने पैशनेटली सॉल्व करने की कोशिश की, विच ट्रांसलेटेड इनटू अ बिजनेस वेंचर. बट देयर आर मे बी टेंस ऑफ थिंग्स विच यू डोंट नो, विच यू लर्न. एंड ऐसा भी नहीं है कि तुम पढ़ाई में अच्छे थे, पढ़ते थे, मार्क्स आते थे, लेकिन रणछोड़ दास नहीं थे.
तो how do you learn new things? How do you cope up with new things, new technologies? Even forget about the technology. कि यार मुझे ये business में ये problem solve कैसे करनी है? Who are your mentors? How do you? So first mentor obviously is family only because like you learn a lot from your parents. Like my dad is very hardworking. I've seen him growing from like very basic things to something very rich and posh, I'll say. So how was that? It was nothing that it's like his father gave him or it was just destiny which happened, but it was hard work. So you learn a lot from there. Apart from this, I use a lot of AI because actually any problem that you have, even about HSNs, which is like a very common thing about the legalities or anything, so I use AI. Then third is that I have started reading a lot of startup books and YouTube. Like you actually learn a lot from these places, so that's what I do. What about you? So again, as she mentioned, parents are the first mentors. My dad, like I saw him like doing the sales, talking to people, conversating, making good relations, the PR part. So that's what I understood, that how to maintain a relation with a 40 or 50-year-old person when you are just 18 or 20 years old. Yeah. So that is something which helped us going forward. Then yeah, like not any specific mentor I would say. We have been each other's mentors and like the support system throughout the journey. And yes, when we meet new people, new entrepreneurs or like big founders of companies wherein we are working with them, so we have learned from them a lot. Because there are days when you just burst out in tears that ये करना है नहीं करना है हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है तो obviously एक दूसरे तो होते हैं हम. Yeah. No, that's the joy of always having co-founders. Right. Because ultimately, and as you scale, trust me, it's gonna be tough. It's gonna be lonely. Right. Because what you go through, not many will understand that. Right. But you, after certain time, आप लोग ये पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे होगे. Correct. वो तो हाँ, after certain time, it's for the impact, for the Right. work which you want to do. So yes, you are very right, and that's why I always tell, let's say, young entrepreneurs that it's okay to have an entrepreneur, Right. co-founder. It's okay to go out in your network, अपने friends, दोस्तों, रिश्तेदारों में, घर में ढूंढो कोई ना कोई co-founder. It depends that trust should be there. Obviously. In terms of monetary sense also, because मुझे एक भी दिन जब से हम बिजनेस कर रहे हैं याद नहीं कभी हमने पैसों के लिए या फिर उस बिजनेस के रेवेन्यू के लिए या किसने कोई विड्रॉल कोई आज तक याद ही नहीं है किसी को Fair. बिकॉज दैट थिंग हैज नेवर हैपेंड एंड नन ऑफ अस एवर विड्रॉल any amount from the company also for any personal usage or like doing any fun or in that way. Yeah. That was always for the company, that it's our company and we have to make that baby big. Yeah. No, that's also very good. Yeah, because these are the strong foundations which will help you build the. Right. Who between the two of you is more stricter with the employees? I think Riya. Yeah. Yeah. Like I But operations तुम manage करते हो यार. So it's a two-way thing. एक रूड है तो एक को सॉफ्ट होना पड़ेगा. अगर दोनों रूड होंगे तो वो टीम में एक है. As in, अगर गलती है सो शायद मैं उससे ज्यादा एग्रेसिव होऊंगा. But in terms of the discipline part, in terms of making fixed SOPs, कि if you are late by this certain time, your amount would be deducted. So these were the rules which she has made and we have seen positive results out of it. Yeah. And I was someone कि ठीक है चलो करने दो यार. So this is something जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को मैनेज करते हैं. there has to be a good cop and a bad Yeah, cop in every yeah. situation. Like I'm always not the bad cop, but still. So great. अगर ये लॉजिस्टिक्स में नहीं होते, बिकॉज ऐसा नहीं है कि तुमने इसमें पढ़ाई की है, घर में कुछ ऐसा था, Right. ये तो you just stumbled upon on this. Given you an opportunity once again, what would you have done otherwise? I think I would have been a choreographer. What would you? I've never thought about it because from the day I started doing it, it was like the last day of my 12th. Yeah. And from that day till today, I'm doing the very same thing. So ऐसा कुछ सोचा नहीं कि ये नहीं करना था, मुझे तो वो करना था. ऐसा कोई ड्रीम छोड़ा नहीं है. And अच्छा है, पैशनेट है इस चीज़ को करने के लिए. So yeah, logistics is good enough. Like even I'll tell you one story Sure. which happened. So in the beginning when there was lockdown,
पहले ऐसा नहीं था कि बॉर्डर्स क्लोज हो जाएंगे नोएडा और गुड़गांव के, एंड सडनली देयर वाज अ सिचुएशन कि कल से बॉर्डर्स क्लोज हो रहे हैं. सो अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, हमें पता चल गया दैट वी आर गोना लूज ऑन देम, एंड स्टार्ट भी नहीं हुआ और अभी ख़त्म हो रहा है. तो बहुत, और इसमें कोई सोल्यूशन भी नहीं था बिकॉज लाइक इवन अमेजोन, जोमेटो एंड स्विगी के राइडर्स हमें दिख रहे थे खड़े हुए बॉर्डर्स पे. हमारे राइडर्स वीडियो बना बना के भेज रहे हैं दैट दिस हैज हैपेंड. मैंने कोल्ड ईमेल लिखा सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, मतलब नेम देम एंड आई रोट. कितनों को कॉल किया, ऑब्वियसली किसी का कॉल नहीं मिल रहा था बिकॉज उस वक्त ये भी था हॉस्पिटल बेड्स, तो उसकी वजह से कॉल जा रहा होगा. सो आई गॉट अ रैंडम कॉल एंड मैंने उठाया एंड शी सेड आई एम मेनका गांधी एंड यू रोट एन ईमेल टू मी. एंड आई वाज लाइक यस आई रोट एन ईमेल. मतलब वो ऑस्ट्रक होते हो दैट रियली, मतलब इतने बड़े डिजास्टर में डज दैट कोल्ड ईमेल इतना वैल्यू रखता है किसी की लाइफ में कि मुझे कॉल करें. इनफैक्ट उनका कोई एम्प्लॉय भी कॉल नहीं कर रहा, शी herself called. Wow. And she asked me that I read it and what's it about. So I told her that हम ऐसे help भी कर रहे हैं, businesses के लिए भी कर रहे हैं, but we are not able to do that. She gave us a number of joint commissioner at that time, and Yeah. then that joint commissioner like connected to us to DM of South at that time. So Shri BM Mishra ji was DM of South at that time. And in 1 Yeah. second, he issued all the e-passes to all our delivery riders. So at that time, like हमारे riders ना वीडियो बना के भेजते थे कि देखो ये सब यहाँ पे हैं and हम पास कर पा रहे हैं. So that was a big achievement for us कि even thinking that there are big giants, but maybe वो solution कभी-कभार easy होता है, Right. but everyone cannot think about that. And we are still thankful to Miss Manika Gandhi. अगर वो डिसीजन या कॉल नहीं आता, शायद हम उसको कंटिन्यू ही ना कर पाते. उस एक डिसीजन, उस एक हेल्प से वो नंबर देना, कनेक्ट करना, ई पासेस मिलना मतलब और ये तो पूरे मेरे दिल्ली माइंड एनसीआर में में भी नहीं मूव था कि करना. ऐसा कुछ हो सकता है. Wow, I think it's a very good, I was about to end the podcast. You luckily narrated this story because it's always good to end on a great note. As always, I have always been very goosebumpy after listening to the stories. But that's what differentiates young entrepreneurs than the corporates, then the thinkers, is just do it, bro. कर लो ना एक कोल्ड ईमेल. वो कोल्ड ईमेल से कंपनी बच गई, सस्टेन कर गई और अब स्केल कर रही है. And what the other thing which struck to me while talking to these two guys is, they kept building, they kept iterating, they kept adding value. They never said no. किसने बोला यार ये सोल्यूशन देना है, इन्होंने ये बना दिया. इन्होंने बोला इस टाइप का राइडर चाहिए, ये बना दिया. इन्होंने बोला कि भैया फिक्स मॉडल करना है, ये बना दिया. So when you are new, when you are starting it out, learn from these guys. Yeah, this is how you build the organization. Because you don't know कि कौन सा वर्टिकल, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सर्विस कितना बड़ा बन जाएगा. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यू लर्न हाउ डज द इंडस्ट्री वर्क. अ ग्रेट स्टोरी ऑफ राइडिंग रेंजर्स, Riya and Anchit. I really want each one of you, all the listeners, student entrepreneurs, young guys, learn from them, learn from one small thing. Just keep doing it, keep at it. And from all the corporates, all the owners, if you want the safe, reliable transport logistics partner, these guys are there. Thank you. Bye-bye.